Okay. Okay, so everything is clear from my side. So let's start with some questions. So first question is, a dioecious flowering plant prevent both autogamy and geitonogamy, geitonogamy and xenogamy, cleistogamy and xenogamy, autogamy and xenogamy. Okay, so this is the question. Please answer it. I'm launching poll for you guys for answering. Everyone want to attend it because question is so simple. Correct, Jagtap. Preeti Jagtap. Correct, Manjiri. Correct, Sheetal. Correct, Vaibhav. Okay, guys, 20 seconds are left. Please answer fast. Correct, Amung Michi. Correct, Ahilya. Okay, so I am ending this poll. And this is your result. Here, maximum people choose on option A. Obviously, option A is the correct option. Okay. Then we will go, if this type of question asked in examination, actually this is a direct question. If you know about the flower, if you know about dioecious flower, if you know about autogamy, geitonogamy, okay, so you solve this question. Okay, there have no any logical thing in this question. Okay, so सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान में रखना है, whenever we read about the cross pollination and cell pollination, there have some other name also. If we read about the cross pollination, then cross pollination also known as the xenogamy. ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, xenogamy. ठीक है, likewise in case of autogamy it is the cell pollination. autogamy का मतलब क्या होगा, cell pollination. Okay, next is a geitonogamy. Then what is meant by geitonogamy? So this thing I'm right here, pollination by different flower, but same plant. ठीक है, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर है ना, जो है अलग अलग फ्लावर क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे. दैट थिंग इज नोन एज अ गeitonogamy. ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लेस्टोगैमी. क्लेस्टोगैमी इज द सेल पॉलिनेशन बट इट हैपन इन द क्लोज फ्लावर. ठीक है, ये कहां पर होगा, क्लोज फ्लावर में होगा. फॉर एग्जांपल पी प्लांट, पी फ्लावर इज द क्लोज फ्लावर. इन दैट केस वी डिस्कस अबाउट द क्लेस्टोगैमी. सॉरी, क्लेस्टोगैमी. ठीक है, so this cleistogamy happen in the close flower. Okay, so here in question they ask about the dioecious flower. ठीक है, then what is mean by dioecious flower? So dioecious flower are the unisexual. ठीक है, then what is mean by unisexual? For example, this is a plant A. Okay, this is the plant A, have a male plant. Okay, and other plant, this is a plant A, and other plant B have a female plant. Okay, so this flower or this plant is a female. ठीक है,
So this type of plant is known as the dioecious. Then what is meant by monoecious? Where both type of flower are present, either we can say male flower and female flower, or we can say the both sexes are present. Okay, जहां पर एक प्लांट पे ही both sexes present रहेंगे, that is known as a monoecious. Then what is meant by dioecious? Dioecious are the unisexual. So autogamy means self pollination is not possible in case of dioecious flower, because यहाँ पर खुद के ही जो फ्लावर है उसका पॉलिनेशन उसके फ्लावर पे नहीं हो सकता, बिकॉज सेक्सेस आर दी सेम, दैट्स व्हाई. उसी तरीके से गैटोनोगैमी आल्सो नॉट हैपन इन इट. ठीक है, बिकॉज गैटोनोगैमी अगेन इट इज द पार्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, so that's why option A is the correct option from this question. ठीक है, चलिए. If you have any type of doubt, you can ask me. If no, then we going toward the next question. Next is which one of following statement is not true? कौन सा statement true नहीं है? Okay. This type of question is a little bit logical and little bit we can say knowledge based. ठीक है, हमें पता होना चाहिए different functions of part of we can say embryo sac. ठीक है, सॉरी जो एम्ब्रियो सैक या जो डेवलपमेंटल थिंग्स रहती है, ठीक है, प्लांट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दी पोलन ग्रेन. ओके, और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट है उससे ये रिलेट करता है. ठीक है, सो व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉट ट्रू? ठीक है, टैपिटम हेल्प in the diaceans of anther, exine or pollen grain are made up of sporopollen. Pollen grain of many species cause severe allergies. Stored pollen in liquid nitrogen can be used as a crop breeding program. I am launching poll, guys. Please answer it. Correct, Manjiri. Correct, Preeti. Correct, Sheetal. चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका. करेक्ट वैभव. Ten seconds are left, guys. Please answer. So I am end this question. Correct, Ahilya, and this is your result. Here maximum people choose an option A. Obviously it is correct option. Okay, so we want to know about the microsporangium in this question. For example, this is the structure of microsporangium. Okay, this type of structure, and there have different layer or different wall we can say present in this thing. Okay, like that. Okay, so the first layer is the epidermis. Okay, पहला layer क्या रहेगा? Epidermis. Okay, next is the endothecium. Okay, next part is the endothecium. Okay, after that middle layer. Okay, and after that the tapetum is a present in it. Tapetum is a present in it. Okay, so what is meant by Dyson's process then? Dyson's process is the breaking of this portion, and that's why pollen grain get released from it. मतलब यहाँ से pollen grain क्या होता है, यहाँ पर बीच में रहने वाला release होता है by the Dyson's process. Okay, so in this case tapetum is the around on the pollen grain, or we can say developing pollen grain. अब तक pollen grain का development नहीं हुआ है यहाँ पर, but यहाँ पर pollen grain का development होने वाला.
So for this purpose, tapetum provide the nutritions. tapetum क्या करेगा? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा. Okay, and that's why function of tapetum to provide nutrition to developing pollen grain. तो pollen grain develop होने वाला है, उसको ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. And that's why option A is the correct option, because it is a not a two. It not take part in the Dyson's process. So which part is a take part, or which thing is a take part in the Dyson's process? So epidermis endothecium is a taking part in the Dyson's process. In some book, I think in NCERT middle layer also use as a taking part for a Dyson's process, but in some other books middle layer का function बताया गया है. Middle layer provide the nutrition to tapetum. Okay, and tapetum provide the nutrition to we can say developing pollen grain. ठीक है, तो इस तरीके का जो है सिस्टम रहता है. So mainly epidermis and endothecium are taking part in the Dyson's process, and tapetum is responsible for the nutritional purpose. ठीक है, tapetum क्या करेगा? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा. All other things are the true from this different option. For example, exine is the outer part of pollen grain and it made from the sporopollenin. Okay, and sporopollenin is a one of hard structure and non-biodegradable. Next is the pollen grain of many species cause severe allergies. It is a correct statement. Pollen grain store in the liquid nitrogen, okay, for their laboratory purposes. Okay, that's why option A is the correct option. Okay. Next thing is, which one of following may require pollinator but is genetically similar to autogamy? That is xenogamy, apogamy, geitonogamy, cleistogamy. Okay, and I am launching the poll again, guys. Please answer fast. चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए. करेक्ट वैभव, करेक्ट मंजीरी, करेक्ट अमुंग मिची, करेक्ट अहिल्या, करेक्ट पॉम्पी, Ten seconds are remain, guys. Please answer fast. Everyone want to answer it. Okay, so guys, I am ending this poll, and this is your result. Maximum people choose an option D. Obviously, it is correct option. Okay, but only 50% people attend this question. So I want everyone attend this question. So which of following may require pollinator, but it is a genetically similar to autogamy? Okay, that means there have one plant. Okay, this is a clearly logical question. Okay, and this plant have a two flower. Okay, because if they use a pollinator, that means they have a two flower, two different flower. Okay, and that's why first pollinator sit on this flower. Okay, and after that this flower, this pollinator again sit on this flower. Okay, second flower. So this type of activity happens in this plant. Okay, so which of following may require pollinator but is genetically similar? So here you can see genetically similar, that means flower are present on the single plant. Okay, both the flower are present on the single plant. That's why it is a genetically
सिमिलर टू एटोगामी, और ये क्या रहेगा, एक एटोगामी जैसा ही रहेगा, ठीक है। सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एटोगामी, गैटेनोगामी, जेनोगामी एंड क्लेस्टोगामी, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय जेनोगामी? जेनोगामी इज द क्रॉस पॉलिनेशन, दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉट ऑप्शन, ओके। Apogamy, apogamy is a new for you. Apogamy is the thing where some sporophytes, so I am right here, sporophytes converted into gametophyte, okay. And here it is the diploid, that means sporophyte also diploid, okay, and gametophytes also diploid, okay. And this exclusively happen in some ferns, ठीक है। ये कहां पर होता है प्रोसेस? फर्न में होता है, फर्न नहीं फर्न, ये गलत हो गया। It exclusively happen in the fern, okay. That thing is known as the apogamy, इसे हम क्या कहेंगे? अपोगैमी कहेंगे, ठीक है। सो अपोगैमी तो पूरा बाहर का ही पार्ट है, ठीक है, तो इसको इसमें हम कलेक्ट नहीं करते, ठीक है, ये इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज अ क्लेस्टोगैमी. So what's happened in the cleistogamy? So it is the cell pollination happen in the closed flower, okay. So it happen in the closed flower, then it do not need any type of pollinator, ठीक है। So यहाँ पर pollinator की जरूरत नहीं है, no need of pollinator, okay. And only one option is remain, that is a geitonogamy. Then what happen in the geitonogamy? So it pollination by the flower, ठीक है, on the same plant, but flower is the different, ठीक है, मतलब यहाँ पर फ्लावर क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे. So pollination by the another flower in a same plant, ठीक है, and that's why it is the geitonogamy is the correct option, ठीक है। चलिए, what's happened name boy? Is it any issue? Please mention in comment. Okay, चलिए। Name boy, is it any issue? Because you use the CFU, that's why. ठीक है, चलिए। So coming to the next guys, if you have any type of issue, you can ask me in chat, ठीक है। The helium is a scare on the, helium कहाँ पर मिलता है ये पूछा गया है, ठीक है। A fruit where it was attached to pedicel, fruit where style was present, seed where micropyle was present, seed where funicle was attached, okay. And I am launching the poll for you guys, please answer it. Correct Vaibhav? Correct Siddhu? Correct Ahilya? Twenty seconds are remain, guys. Please answer. So I am ending this poll, and this is your result. Here, maximum people choose an option D. Obviously, option D is the correct option. So it is the direct question. You want to know about helium. Helium के बारे में पता होना चाहिए. For example, this is the seed, okay, and seed have this type of portion on it.
इट इज नोन एज द हीलियम, इसे ही हम कहते हैं हीलियम. ओके, एंड ड्यू टू हेल्प ऑफ हीलियम it attaches to the we can say foot part. Okay, ठीक है, that thing is known as the helium, उसे हम कहते हैं helium. That's why seed where funicle was attached, and near the helium you can see the one of pointed part that is known as the micropipe. ठीक है, इसे हम कहते हैं micropipe. Okay, so coming to the next guy, this is a direct question. Next is filiform apparatus is a characteristic feature of nucellar embryo, aileron cell, synergid generative cell. Okay, and I am launching poll again. This is a very easy question. Everyone to attain it. Correct, Siddhu? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बहुत ही सीधा सिंपल क्वेश्चन है. करेक्ट पॉम्पी, करेक्ट मंजीरी, करेक्ट शीतल, करेक्ट अमूंग. Okay guys, so I am end this poll and this is your result. Here maximum people choose an option C. Obviously it is correct option. ठीक है, सभी को ही पता है फिलिफॉर्म एपरेटस जो है वो कहाँ पर रहेगा, सिनर्जिड में हमें देखने को मिलता है. अब सिनर्जिड कहाँ पर रहता है? सो जस्ट remember this type of diagram. Here you can see the three antipodal cell. Okay, antipodal cell, this is the embryo sac. ठीक है, and here you can see two cell that is known as the synergid. ठीक है, on the synergid you can see the egg cell. Okay, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, egg cell देखने को मिलता है, and this is a polar nuclei. Polar nuclei. Okay, so this is the diagram. ठीक है, एम्ब्रियो सैक का ये जो है पूरा का पूरा एक डायग्राम जो है हमें देखने को मिलता है. अब यहाँ पर माइक्रोपोलर पाइलर एंड जो रहेगा, ठीक है, दिस इज अ माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, एट दैट एंड यू कैन सी द सिनर्जी, and synergy filiform apparatus is equally important for to we can say guide the pollen tube. ठीक है, ये pollen tube को गाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट रहे. ठीक है, चलिए. So generative cell present in the we can say pollen grain. Pollen grain में generative cell रहेगा. There are two type of cell, vegetative cell and generative cell. Okay, aileron cell is present on the seed. ये seed के अंदर present रहता है. न्यूसेलर एम्ब्रियो भी जो है एम्ब्रियो सैक के साइड में प्रेजेंट रहेगा, बट इन केस ऑफ सम प्लांट्स, ऑल प्लांट में ये नहीं रहता है न्यूसेलर एम्ब्रियो. ओके, एंड इट इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ अपोमिक्सिस. अपोमिक्सिस के प्रोसेस में ये काम में आता है. Next is animal vector are required for pollination in. Actually, this is also knowledge-based question. You want to know about the vectors or pollinators. ठीक है, then you can solve this question. Maize, mulberry, Vallisneria, cucumber, and I am launching poll for you guys. Please answer.
Pompi incorrect, Manjir incorrect, Amung incorrect, Sheetal incorrect, Ahilya correct. Okay, so I am aimed at this question, and this is your result. And here you can see the different variation pattern in the answer, because a lot of student don't we can say discuss this thing, or we can say उसको थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं, या हम इस चीज को पढ़ते नहीं है, दैट्स व्हाई दिस हैपन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चार्ट जो है वो क्रिएट करना है, आई थिंक। ओके ठीक है, चलिए मैं एक चार्ट को भेज दूंगा। ठीक है, जहां पर कौन सा पॉलिनेटर जो है वो किस प्लांट को जो है जनरली क्या करता है, पॉलिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, ये देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, सो हियर मेज एंड मलबरी आर वी कैन से पॉलिनेट बाय द वाइंड। ठीक है, इसको कौन पॉलिनेट करेगा, वाइंड पॉलिनेट करेगा। इन केस ऑफ वैलिसिनेरिया इट पॉलिनेटेड बाय द वाटर। ठीक है, ये पानी से पॉलिनेट होता है। इन केस ऑफ कुकुम्बर इट पॉलिनेट बाय बीज। ठीक है, बीज मीन्स एनिमल। ओके ठीक है, so here one thing is the logic that is if we said about the maize। ठीक है, if we told about the maize, ठीक है, maize का जो फ्लोरोसेंस, ओके, एंड इस तरीके से इसका अपीयरेंस रहता है। ठीक है, why this type of appearance present in the maize, because it trap the pollen grain। ये क्या करता है, पोलन ग्रेन को ट्रैप करता है। ठीक है, that means this portion we can say it hang in the wind। ये क्या wind में hang होगा, and that's why it trap the pollen grain। ठीक है, तो इसके वजह से ये एक हिंट जो है हमें मिल जाता है यहाँ पर about the maize, if you know about the structure of maize there। ठीक है, मलबरी का ही वैसे, and Vallisneria, example of Vallisneria also present in your book। ठीक है, तो ये हमें तो क्लियर होना ही चाहिए, and that's why जो बचता है that is the cucumber। ठीक है, so cucumber का जो pollination है it happen by the bees। ठीक है, that's why option D is the correct option here। Coming to the next guys, next question, which of following statement is correct? Sporopollenin can withstand high temperature but not strong acid. Sporopollenin can be degraded by the enzyme. Sporopollenin is made up of inorganic material. Sporopollenin can withstand high temperature well as well as strong acid and alkalis। ठीक है, so I am launching poll again। This is a very easy question, please answer it। So you want to know about the sporopollenin, जिसको पता है वो सॉल्व कर ही लेंगे इसको। करेक्ट सिद्धू, करेक्ट वैभव, करेक्ट मंजीरी, करेक्ट अहिल्या, करेक्ट शीतल, करेक्ट पॉम्पी, करेक्ट अमूंग, okay, so I am end this poll and this is your result। Here maximum people choose an option D, obviously it is correct option। ठीक है,
इसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. सो स्पोरोपोलेनिन इज अ पार्ट ऑफ एक्साइन. ये एक्साइन का पार्ट है. ठीक है, एक्साइन क्या रहेगा? पोलन ग्रेन का आउटर पोर्शन. ठीक है. And why it is a tough? Because it want to protect the pollen grain. ये क्या करता है? पोलन ग्रेन को बचाने के लिए उसके अंदर जो दो सेल्स है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, उसको बचाने के लिए ये काम करेगा. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अदर ऑप्शन आर दी रॉन्ग. बाकी के ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग. ठीक है. Which one of following statement is wrong? When pollen is shed at two cell stage, double fertilization does not take place. Vegetative cell is larger than generative cell. Pollen grain in some plant remain viable for a month. Intine is made up of cellulose and pectin. I'm launching poll again, guys. Please answer it. चलिए. करेक्ट. वैभव करेक्ट. मंजिरी करेक्ट. अमुंग करेक्ट. करेक्ट. अहिल्या. So I am ending this poll, and this is your result. Here maximum people chosen option A. Obviously option A is the correct option. ठीक है. चलिए देखते क्वेश्चन क्या है. Here they ask which one of following statement is wrong. कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? सो हम देखते बाकी के तीन ऑप्शन, बिकॉज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. So vegetative cell is larger than generative cell. Correct. Vegetative cell is larger than generative cell. Generative cell is a smaller one. Okay. Generative cell क्या रहता है? Small रहेगा. Okay. And it present in the pollen grain. कहाँ पर मिलेगा हमें? Pollen grain. Then what is function of vegetative cell? Vegetative cell का function क्या रहेगा? Vegetative cell also known as the tube cell. Why it known as tube cell? Because it develop a tube ड्यूरिंग आफ्टर शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन जब शेड होता है, ठीक है, तब ये क्या करेगा? शेड होने के बाद में इट लैंड ऑन द वी कैन से स्टिग्मा एंड दे फॉर्म द पोलन ट्यूब. ठीक है, तब वेजिटेटिव सेल स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द रॉन्ग. दैट मींस ये स्टेटमेंट सही है, इसकी वजह से ये रॉन्ग है. Pollen grain in some plant remain viable for the month. This also correct statement. This also true statement. This also true statement. Okay. Intine is made up of cellulose and pectin. This also true statement. Okay. But when pollen is shed at a two cell stage, double fertilization does not take place. It is a wrong statement. So बताता हूँ सिद्धू. ठीक है. So first of all, what is mean by two cell stage and three cell stage? ठीक है. टू सेल स्टेज और थ्री सेल स्टेज क्या होता है सबसे पहले? ओके, चलिए. सो व्हेनेवर पोलन ग्रेन डेवलप, देयर हैव अ 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म शेड एट अ टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज. ओके. एंड 40% एंजियोस्पर्म शेड एट अ थ्री सेल स्टेज. ओके गाइस, three cell stage. Okay. Then what is mean by two cell and what is mean by three cell? अब ये दो चीजें रह गई. So you can see this is the normal pollen grain. ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया, this is a normal pollen grain. And pollen grain have a two cell. That is a one cell is the vegetative cell.
that also known as a tube cell, and next cell is the generative cell. Okay, हो गया clear? So when pollen grain is a shed, shading means, for example, we discuss about the microsporangium, okay, and in microsporangium pollen grain is a developed, okay, and after development of pollen grain, this microsporangium get brushed, okay, and वो पूरा का structure जो है वो brushed होगा, and after brushing it get spread, and this type of spreading is known as the shading. उसे हम क्या कहते हैं? shading, or we can say brushing or diascence, ठीक है, that thing is the shading, उसे हम कहते हैं shading process. Okay, so when in case of some pollen grain, if it gets shade, जब वो बाहर निकलता है उस माइक्रोस्पोरेंजियम से पूरे, ठीक है, एट दैट टाइम if it have a two cell, ठीक है, उसके अंदर अगर दो सेल रहता है, then it known as a two cell stage shading, उसे हम क्या कहेंगे? two cell stage shading. हो गया क्लियर? ठीक है, लाइक अभी वो दो सेल कौन से रहेंगे? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. ओके, उसके बाद हम देखेंगे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल? ठीक है, बिफोर दैट वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्री सेल स्टेज. ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्री सेल स्टेज? व्हेन सेल हैव अ थ्री कंपार्टमेंट. ओके, मतलब ये पोलन ग्रेन जो है इसमें तीन कंपार्टमेंट रहेंगे. नॉट अ सेल, पोलन ग्रेन हैव अ थ्री कंपार्टमेंट्स. ओके, one is a big one, that is a vegetative cell, or we can say tube cell. Okay, ये क्या रहेगा? वेजिटेटिव सेल रहेगा इसका. ठीक है, एंड दिस टू कंपार्टमेंट्स आर द जनरेटिव सेल्स. ठीक है, ये बाकी के दो कंपार्टमेंट्स और दिस टू सेल्स, ठीक है, दैट इज अ जनरेटिव, और ये रहेंगी जनरेटिव. सो 40% प्लांट्स, ओके, और वी कैन से 40% एंजियोस्पर्म शेड एट अ थ्री सेल स्टेज. ठीक है, मतलब 40% जो है वो कितने स्टेज पे शेड करता है? थ्री सेल पे. दैट मींस इट कंटेन अ थ्री सेल इन देयर पोलन ग्रेन. मतलब एक पोलन ग्रेन के अंदर कितना सेल रहेगा? तीन सेल. अब इसका काम क्या रहेगा? ठीक है, चलिए. सो दिस वेजिटेटिव सेल हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब. वेजिटेटिव सेल क्या करता है? पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट करेगा. इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्लियर होगा. अब जनरेटिव सेल क्या करता है? सो जनरेटिव सेल इज an important part. For example, this is a pollen grain which shed on a two cell stage. This is a generative cell of it. ये क्या हो गया? जनरेटिव सेल हो गया. ओके, and this is a we can say vegetative cell. Okay, this is a vegetative cell. Then what's happened? So we want two generative cell in this case. ठीक है, why we want two generative cell? Because we want to perform a double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन के लिए कितना सेल की जरूरत होगी? कितना जनरेटिव सेल चाहिए? वी वांट टू जनरेटिव सेल, बट हियर यू कैन सी द ओनली वन जनरेटिव सेल. यहाँ पर तो एक ही जनरेटिव सेल है, फिर यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? ठीक है, सो हाउ possible double fertilization by one generative cell? So there have one we can say process. For example, when a tube get formed by vegetative cell, at that time this generative cell form division. ठीक है, और this generative cell perform the division in the pollen tube. ठीक है, ये क्या करेगा? डिवीजन करता है पोलन ट्यूब के अंदर. That's why here two generative cells are developed. Okay, that means here you can see the vegetative cell. It important for the development of pollen tube, and this generative cell start dividing. That's why here you can see the two generative cells are developed. Two generative cell क्या होता है? यहाँ पर develop होता है, and one generative cell. ठीक है, ये एक जनरेटिव सेल हो गया, ये एक जनरेटिव सेल हो गया. ठीक है, इट फ्यूज विद द एग सेल. ठीक है, ये किसके साथ फ्यूज होगा? एग सेल के साथ, एंड इट फॉर्म द जाइगोट. ओके, एंड नेक्स्ट जनरेटिव सेल इज फ्यूज विद टू न्यूक्लियस. ठीक है, विच प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और वी कैन से पूरा जो सेंट्रल सेल है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, टू न्यूक्लियस, एंड इट फॉर्म द
एंडोप्लाज्मिक सॉरी एंडोस्पर्म, ये क्या करेगा, एंडोस्पर्म को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब 3 जनरेटिव सेल में क्या होता है ना, 3 जनरेटिव सेल सॉरी, जहां पर 3 सेल रहता है पोलन ग्रेन के अंदर, 1 इज द वेजिटेटिव सेल and 2 are the generative cell. Okay, in this case there have no any division happen in the pollen tube. मतलब इस केस में क्या होता है, पोलन ट्यूब के अंदर डिवीजन नहीं होता है, पोलन ट्यूब के अंदर डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ गया? एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट। अब ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट क्यों है? When pollen is shed at 2 cell stage, double fertilization does not take place. But double fertilization happen if pollen shed at 2 cell also. ठीक है? Why double fertilization happen? Because here generative cell divide into 2 cell again in the pollen tube. मतलब generative cell क्या करता है, 2 सेल को बना लेता है पोलन ट्यूब में and they perform the double fertilization. Is it clear to all guys? If it clear, click on yes. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये ट्रू नहीं। ठीक है, it is a wrong option. When pollen is shed at 2 cell stage, double fertilization does not take place. It is a wrong. ठीक है, मतलब यहाँ पर पोलन 2 सेल स्टेज पर भी अगर शेड होता है तभी भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा एंड इट हैपन इन द 60% प्लांट्स। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट रहेगा 60%, उसमें ये केस होता ही है। ठीक है, गूगल पर तुमने अगर पढ़ा है सिद्धू तो वो अच्छे से चेक कर लो फिर से एक बार, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लिया इन एबनॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन डाइकॉट प्लांट इज। अरेंजमेंट कैसा रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लिया इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट। ठीक है, 2 3 सॉरी 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2। आई एम लॉन्चिंग पोल फॉर इट अगेन, प्लीज आंसर इट। करेक्ट शीतल, करेक्ट अमूल। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। ओके, so I am in this question and this is your result. Here maximum people choose an option A, obviously it is correct option. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन सीधा सीधा है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लिया इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक। दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, दिस इज नॉर्मल एम्ब्रियो सैक एंड यू कैन सी देयर हैव 2 एंड, 1 एंड इज द चलाजल एंड। ठीक है, ऊपर का साइड वाला रहेगा चलाजा। ठीक है, नीचे वाला रहेगा माइक्रोफाइलर एंड। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम अरेंजमेंट देखेंगे, सो ऑन चलाजर एंड यू कैन सी द 3 सेल्स, दैट सेल इज नोन एज द एंटीपोडल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल।
in between this complete cell, that is this is a complete central cell we can say, ये पूरा central cell है, इसके बीच में you can see the two nuclei and that nuclei is known as the polar nuclei. इसे हम कहेंगे polar nuclei. And after polar nuclei you can see the two cell here, that thing is known as the synergid. इसे हम कहेंगे synergid. And above the synergid you can see the egg cell. ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, egg cell. And that's why if you see the complete structure of nuclei here, so this is a 3 nuclei, this is a 2 nuclei, and this is a 3 nuclei again. That's why 323 is the correct option. Okay, other options are the wrong. Okay, so coming to the next, guys, if you have any type of doubt you can ask. Through which cell of embryo sac does the pollen tube enter the embryo sac? Egg cell, persistent synergid, degenerated synergid, central cell. I'm launching poll again, please answer fast. Okay. One minute, guys, 1 minute. Okay. Correct मंजरी, correct वैभव. ठीक है, चलिए, I am in this poll and this is your result here. Maximum B and C में कंफ्यूजन हो गया सभी को, ठीक है, फिर भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है. चलिए, so what is the question? क्वेश्चन क्या है? So through which cell of embryo sac does the pollen tube enter to embryo sac? ठीक है, कौन से पार्ट से pollen tube की एंट्री होती है embryo sac के अंदर? So again there have a cell. Okay, ये इस तरीके का सेल जो है हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है. So when ये तो सभी को कॉमनली पता है, pollen tube enter by the synergids, ठीक है. ये कहाँ से एंटर करेगा? synergid से एंटर करेगा, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू बुक्स जो है इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द डीजेनरेटेड सिनर्जिड. देन व्हाई डीजेनरेटेड सिनर्जिड इज द करेक्ट हियर? because when this pollen tube get enter at that time this synergid get destroyed. ठीक है, ये synergid क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है. and that's why degenerated synergid is the correct answer, ठीक है. persistent synergid ये करेक्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है. चलिए, ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान में रखना जो थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं. आपके पास जो लास्ट ईयर पेपर्स होंगे उसके सॉल्यूशंस होंगे, उसमें से ऐसे क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट, इन oogamete fertilization involve a small non-motile female gamete, a large motile male gamete, a large non-motile female gamete, and a small motile male gamete, a large non-motile female gamete, and a small non-motile male gamete.
a large motile female gamete and small non-motile male gamete. Okay, so I am launching poll again, guys. Please answer it. Correct, Vaibhav. Correct, Sidhu. Okay. Correct, Manjiri. Correct, Sidhu. 10 seconds are left, guys. Please answer it. Okay, guys. So I am ending this poll. And this is your result here. Maximum people choose an option B. Obviously, it is correct option. ठीक है. चलिए. So first of all, what is meant by ugamy? Ugamy का मतलब क्या होता है? So it is the process where gamete differ in size. ठीक है. ये एक टर्म है जिसमें हम क्या इसका जो है स्टडी करेंगे. Gametes differ in size. ठीक है. So you already know about one thing. And एक चीज हमेशा commonly ध्यान में रखना. Whenever we told about the different gametic cells, so generally egg cells or female gametes are big. ठीक है. Female gamete कैसी रहेंगे? Big in size रहेंगे. ठीक है. And male gamete generally are the smaller in the size. Okay. This one thing is want to remember. Again, one thing, when we talk about the male gamete are the motile. Okay. एंड फीमेल गमीट जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? नॉन मोटाइल रहेंगे. ठीक है. ये चीज ध्यान में रखें. चलिए. अब उसी वजह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए अ स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गमीट. सो हियर देयर हैव नो नॉन मोटाइल फीमेल गमीट. ठीक है. सॉरी, फीमेल गमीट इज अ नॉन मोटाइल बट इट इज नॉट अ स्मॉल. ठीक है. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट, अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गमीट. हाँ, यस, दिस इज करेक्ट थिंग. ठीक है. And a small motile male gamete. Okay, so this is a correct. Okay, a large non-motile female. So it is a large non-motile female gamete and a small non-motile. So here male gamete is the motile. So this word is a wrong. A large motile female gamete and a small non-motile male gamete. So here again non-motile is the word. This is a wrong. That's why option other options are the wrong and B is the correct option. Okay. Next is flower showing orthinophily shows a few characteristics like blue flower with nectaries at a base of corolla, red sweet scented flower with nectaries, bright red flower into thick inflorescence, white flower with the fragrance. Okay. So this is a some type of logical question. You want to use your knowledge and some of logic and answer it. I'm launching poll again, guys. Please answer fast.
correct among, no, incorrect. Incorrect Manjeri, incorrect Pompey. Okay, so I am in this code, and this is your result here. Okay, guys, so poll have some issue, but here no one chosen option A. Actually, option A is the correct here. Then why it correct? Okay. So here you can see the blue flower with the nectar is at the base of corolla. Orchinochily is the pollination by the birds. ठीक है, ये birds के द्वारा होने वाला pollination है सबसे पहली चीज. अब birds जो रहते हैं वो pollination कौन से base पर करते हैं? ठीक है, so first thing is a bright color. Okay, bright color, and next thing want is the nectar for the pollination of bird, pollination by the bird. नेक्टर और ब्राइट कलर की जरूरत होती है, ये दो चीजें होनी चाहिए बर्ड के साथ. अगर हम बी ऑप्शन को चूज करते हैं, देन इट इज अ रेड स्वीट सेंटेड फ्लावर. दैट मींस इट हैव अ सेंट, इट हैव अ टेस्ट, इट अगेन द कलर दैट इज अ रेड. ठीक है, एंड इट हैव अ नेक्टरीज आल्सो, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ मैक्सिमम चांसेस इट पॉलिनेट बाय द बीज और इंसेक्ट्स. ठीक है, इसको बीज और इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्राइट रेड फ्लावर इन अ थिक इनफ्लोरेसेंस. इफ हियर यू कैन सी द इनफ्लोरेसेंस, अगेन इट पॉलिनेटेड बाय द बीज. ठीक है, क्योंकि इनफ्लोरेसेंस जिस प्लांट में रहता है, ठीक है, उसको पॉलिनेट कौन करता है? बीज करते हैं, और वाइंड करता है, वाइंड भी पॉलिनेट करेगा इसको. ठीक है, व्हाइट फ्लावर विद फ्रेग्रेंस, अगेन इट pollinator is the bees, और इस जगह पर भी कौन रहेगा? बीज रहेगा. That's why option A is the correct option, where you can see the bright color, that is a blue flower, as well as it have a nectaries. ठीक है, उसमें nectaries हमें देखने को मिले. चलिए, coming to the next, guys. Next question is how many pollen grain will form after meiotic division in a 10 microspore mother cell. So 10 microspore mother cell का अगर meiotic division होता है तो कितना pollen grain का formation होगा? I am launching poll again, guys. Please answer fast. चलिए, incorrect अहिल्या. मंजिरी correct. सिद्धू correct. शीतल correct. If you know about the cell cycle, then you can choose, or cell cycle, cell division. अगर आपको पता है, so you can choose the correct option. अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम है. करेक्ट शीतल, करेक्ट सिद्धू. Okay, so I am end this poll, and this is the result. So maximum people choose an option C. Obviously, it is correct option. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर एक सेल रहेगा, दैट इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल.
कोलन मदर सेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 सेल का जनरेशन होगा एंड दिस 2 सेल अगेन कन्वर्टेड इनटू 2 सेल इन द सेकंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वन माइक्रोस्पोर मदर सेल जनरेट 4 पोलन सेल और पोलन ग्रेन जो है उसका डिवीजन करेंगे, ठीक है, 4 अलग अलग सेल यहाँ पर बनेंगी। अब ये जब ये 4 सेल बनती है, ठीक है, ये एक सिंपल प्रोसेस मैंने डायरेक्ट बताया, प्रोसीजर और भी है। There have change in the ploidy. For example, microspore mother cell have a 2N, but it have a N ploidy, ठीक है, and that's why if we take the 10 microspore mother cell, then it have convert into we can say 40 pollen grain, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 40 pollen grain। उसी तरीके से this is one of question for you in the angiosperm, how many microspore mother cell are required to produce 100 pollen grain, 100 pollen grain के लिए कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत है? ऑप्शन आर 25, 75, 50, 100। I'm launching poll again, guys. Please answer it. Correct, Sheetal? Correct, Manshiri? Correct, Siddhu? Correct, Ahilya. Correct, Vaibhav. Correct, Amud. Okay, so only 10 seconds are left, guys. Please answer. I have ended this poll, and this is your result. Maximum people choose on option A. Obviously, it is correct option. ये तो सीधा सीधा जो है इसका 25 आंसर आएगा इसके वजह से, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू एग पोलर न्यूक्लियाई विथ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, वन मेल गमीट विथ एग एंड अदर विथ सिनर्जिड, वन मेल गमीट विथ एग एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। आई एम लॉन्चिंग पोल अगेन, प्लीज आंसर इट। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट मंशी जी। करेक्ट सिद्धू। Okay, so I have ended this poll and this is your result. Maximum people choose an option D, obviously it is correct option, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो गमिट्स रहेंगे, जैसे we already know that is the antipodal cell, यहाँ पर polar nuclei, this is a synergid and egg cell. So it एक जो मेल गमिट रहेगा वो एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा, ओके, एंड इट फॉर्म द जाइगोट। ये क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा एंड नेक्स्ट फ्यूज विद द
central nucleus or secondary nucleus. Okay, and that's why option D is the correct option. Other are the wrong. Next is aluminous seeds store their reserve food mainly in perisperm, cotyledon, endosperm, hypocotyl. Okay, chali. I'm launching poll again, guys. Please answer it. 20 seconds are left, guys. Correct Manjiri, correct Sidhu, correct Amung. Okay, so I'm in this poll, and this is your result here. Maximum people choose an option B. Obviously, it is correct option. Okay. Other options are the wrong. Endosperm is the correct option here. Why not perisperm? So here, aluminous seeds store their reserve food in case of endosperm. In some plant they have perisperm. कुछ plant के अंदर जो है perisperm रहता है. Actually, perisperm made from the nucellus. ये nucellus से बनेगा. ठीक है. And endosperm have a 3n structure, perisperm have a 2n structure. ठीक है. तो कुछ seeds के अंदर perisperm plus endosperm. और एंडोस्पर्म जो है जनरली यूटिलाइज ड्यूरिंग द सीड सीड जो जनरेट होता है तब वो एंडोस्पर्म जनरली क्या होता है यूटिलाइज हो जाता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय सैपरन. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज अ न्यू फॉर यू. ठीक है. ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. ये थोड़ा सा आउटर क्वेश्चन है अब हमारे बुक से. एंड यहाँ पर पूछा गया है कि वायबिलिटी ऑफ सीड हम किससे टेस्ट करते हैं, कौन से केमिकल से टेस्ट करेंगे. Sapramine 2,6 dichlorophenol endophenol. Next is 2,3,5 triphenyl tetrazolium chloride DMSO. And I am launching poll for it, guys. Correct रहेंगे? Please answer fast. Okay, so I'm in this poll, and this is your result. If you attend my previous lecture, then option C is the correct option. ठीक है, आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में शायद लिया था. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर इन द सेंस जो क्रैश कोर्स वाली बैचेस है उसकी. ठीक है, दैट इज अ 2,3,5 ट्राइफिनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड. अब ये करता क्या है, जब हम सीड जो है इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ कलर का इंडिकेशन हमें शो करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ सीड इज अ वायबल देन इट शो रेड कलर. ठीक है, ये कौन सा रेड, ये जो है कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सीड इज अ वायबल. ठीक है, सीड कैसा है, वायबल है. ठीक है, इफ इट शो एबनॉर्मल कलर. ठीक है, एबनॉर्मल मींस एबनॉर्मल कलर, देन सीड इज द वीक. सीड कैसा रहता है यहाँ पर, वीक रहेगा. इफ इट शो वी कैन से नो कलर.
ठीक है, मतलब यहाँ पर नो कलर अगर या कोई भी कलर ये शो नहीं करता, सो इट इज अ नॉन वायबल। ये कैसा शेड रहेगा फिर? नॉन वायबल। ठीक है, दैट इज अ 2,3,5 ट्राइफिनिल टेट्रासोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट ऑप्शन। सैप्रानाइन इज अ स्टेन यूज इन द ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में सैप्रानाइन का यूज किया जाता है। जो 2,6 जो डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल, दिस इज आल्सो स्टेन, ये भी एक तरीके का स्टेन ही है। डीएमएसओ का मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ये एक तरह का फार्मेसी में यूज करने वाला पार्ट। एबनॉर्मल कलर का मतलब होता है कि रेड कलर पूरी तरीके से रेड नहीं रहेगा, इट लाइक अ पिंकिश और व्हाइटिश। ठीक है, दैट इज एबनॉर्मल। ठीक है, और जहां पर कोई भी कलर नहीं आता है, ठीक है, पहले जैसा ही रहेगा वो रहेगा नॉन वायलेंट। ठीक है, okay guys, so this is for today only. In next lecture we discuss the other important topic. Okay, so please answer the NPS and you can leave for a day if you have